Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Muhammad Atiq Anwar, and you are watching my channel, Muhammad Atiq Anwar, and Education for Us All. You find us once again in our kitchen for the a cooking session in our segment Cooking Made Simple. Nazreen Khush Amdeed, ek dafa fir hum Cooking Made Simple सेशन कर रहे हैं. जैसा देख सकते हैं ये है जी एक चिकन डिश और चिकन में होगी गोभी. ये हमारे मास्टर शेफ़ बना रहे हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगी. अस्सलामुअलैकुम. आज हम बनाने लगे हैं चिकन गोभी. उसके लिए हमें प्याज चाहिए होगा. सबसे पहले हम ऑयल में प्याज को डालेंगे, उसको ब्राउन करेंगे. दैन हम अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके हम अपना चिकन ऐड करेंगे. फिर बाकी के स्पाइसेस वगैरह टमाटर वगैरह डाल के उसको भून के फिर हम उसमें अपनी गोभी ऐड करेंगे. जैसे कि आपको पता है गोभी आम इलाकों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो आज हम आपको इसके बनाने का तरीका बताएंगे. Oh wow, that sounds delicious. Guys, if you can hear drums in the background, door in the background, हमारे पड़ोस में शादी हो रही है, so I hope it's not too loud. I hope it doesn't spoil your viewing too much. So let's make a start. Bismillah करते हैं जी. Okay जी, let's start with the oil. हम सबसे पहले अपना ऑयल ऐड करेंगे अपने पैन में. 2 spoons, 3 spoons, I think. 3 tablespoons worth there, viewers. अब हम इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे. ये हमने 2 बड़े प्याज दिए हैं. Okay, 2 big onions are going in, and we're going to give that a few minutes to brown and soften. So that's browned nicely now. अब क्या कर रहे हैं? अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे. Yeah, okay. There we go. The chicken is going in. Boneless chicken, a kilo of chicken. So this is a mixture of thighs and breast. How long are we cooking this for? 10 minutes. 10 minutes. Let's give it a cook for 10 minutes. What are we adding here? अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे. Okay, a little bit of ginger garlic paste. Ginger and garlic. Okay, that looks quite nicely done. What are we adding now? अब हम अपने टमाटर ऐड करेंगे. We're going to, how many tomatoes? 2 टमाटर. 2 big tomatoes. Okay, give that a real good mix. That's coming on nicely. So you'll notice there's water there. Obviously that is the chicken giving off a little bit of water, so we must try to dry that. Okay, and ये कौन से spices है? ये हमारे पास लाल मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला. Okay. So we have turmeric, chilies, garam masala, and salt going in there. As per taste, we like salt and perhaps unfortunately isn't the right word, but we should all have less salt. Okay, we're going to cook that further for how long, Ji? For 10 minutes. 10 more minutes so that all the spices blend in. That's coming on nicely. हम इसमें आप अपनी ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे. कपल मिनट. ये हमने 5 लिए हैं. आप कम भी कर सकते हैं, टेस्ट कम करते हैं. Okay, so the chicken is quite well done now. So we're going to add a few more ingredients. The first of which is green chilies. We are adding 5. That's coming on nicely. The colour is lovely. And we're ready for our other ingredient, which of course is cauliflower. So this was a small cauliflower. This should cook in round about 10 to 12 minutes. We give that a real good mix and we will revisit in 10 to 12 minutes. We've just added a glass of water there, viewers, to make sure it cooks really well.
There we have it, viewers, our final product, chicken gobi masala curry. We're just going to garnish it with fenugreek and our usual coriander. That looks delicious. So I do hope you're going to try that. अब हमने इसमें मेथी ऐड की है, अब हम इसमें अपना धनिया ऐड करेंगे. Okay, that looks lovely. It just remains for me to say thank you. Thank you for watching. Viewers, please keep watching. Tell all your friends about the channel. All your friends on WhatsApp. All your friends on Facebook. Okay, in fact, play all the playlists of cooking or whatever else that you like. Please keep supporting the channel. Okay viewers, बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आप ये डिश ट्राई करेंगे. मेरी तरफ से अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, और अब हम अपने मास्टर शेफ से कहते हैं कि आखिरी गुड बाय और मैसेज भेजें. जी देखिए, हमारी आलू गोभी कह रही हूँ हमारी चिकन गोभी रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है. आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, अपने घर वालों को बना के खिलाएं. थैंक यू सो मच. हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.